Can you start, Atulji? Just a minute when you start recording. Yes, please go ahead. Okay. Good evening, everyone. Shall I start now? Please start. Yes. Okay. Some I have some PPT, so I would like to share the. Chetra ji, आपकी PPT आप ही बताएंगे ना? Shall I share the screen? Yeah, just a minute. First of all, let Atulji begin with the prayer. Okay. Yes, Atul. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ, જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન થિયોસોફી મારી પાસે કેવી રીતે આવી ના વક્તા ચિત્રાજી, મૃણાલ જોશીજી, પૂનમ ઉપાધ્યાય તેમજ મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવીશ. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. Know he is also one with every other. Know he is also one with every other. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ આપનું સ્વાગત છે. So much. शुरुआत करते हुए मैं यही कहूँगा कि हाउ थियोसॉफी केम टू मी बहुत अच्छा चित्रा जी ने आज विषय लिया है. एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा चित्रा जी का. तो वे प्रोफेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और क्वालिफिकेशन उनका BE.M.Tech है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, और वो इसी वक्त PhD भी परस्यू कर रही हैं. साथ ही उन्होंने थियोसॉफी सोसाइटी जो ज्वाइन की, उसमें बैकग्राउंड ये है कि उनके जो मटेरियल ग्रैंड फादर थे वो ES मेंबर थे 50 वर्षों तक, यानी 50 इयर्स तक, और तभी से उनका इंटरेस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी में था उनकी माताश्री के कारण. तो उन्होंने बचपन से ही थियोसॉफी को एक तरह से जिया है, और ऑफिशियली वो मेंबर कुछ 10 वर्ष पहले ही बनी, और हर संडे को मीटिंग्स वगैरह अटेंड करती हैं, बेंगलोर सिटी लॉ से संबंधित हैं, और आज वो मुख्य वक्ता के रूप में हमें इंग्लिश में सारा बयान करें. थैंक यू चित्रा जी. Go ahead with the presentation. You can start your screen sharing now. Okay. Thank you. So I made a PPT. So this PPT, this presentation includes a summary of the book, How Theosophy Came to Me. It's written by C.W. Leadbeater himself. So first slide. So actually it has 9 chapters. Among these chapters, first 2 chapters I'm going to summarize. Okay. So we will start with each slide. Like whenever I have mentioned these names in the topic, it means that is one of the sub chapter in that book. Okay, so just move this one. So in ancient Greece, first beginning of this book, it is about his past life, C.W. Leadbeater's past life. So it starts from 504 BC, where he was born in a family of Epetride in Athens. Okay. So here they were like voyagers, traders. He was in a well-established family, and they were on trades. So during this trade with his brother in the Greek islands, he was able to meet one of the great mathematician and a philosopher, Pythagoras. So these pictures I have taken, like this is from the Greek island. There is a Samos island. There, Pythagoras was there in almost near his death in few years.
So he had moved from Magna Graecia, so the place there he had a school, and he finished some, and he got retired, and he came to Samos Island. There he had a disciple named Cleanus. So he is now actually the now master Dejawal Kul. So this is a picture of him. He's a Tibetan monk, it seems like that. So I took a picture from there. So that is from the slide. The next is in ancient, so Cleans, who was his disciple, two brothers, that is in C.W. Leadbeater's past life. Actually, the names are already there in one of the book. It is Clemens and Aglaoteles. A name was there. So those two brothers were exploring. So and they met his disciple and Pythagoras also. So the disciple Cleanus was explaining the questions whatever those kids used to ask to the disciple about the Pythagorean philosophy very patiently. Once he saw their interest and he realized, okay, and he informed that we will be starting a new branch in Athens. And he gave instructions on ethics in doctrine of incarnation and ministry of numbers. So all this knowledge he shared with them, and it was time to say goodbye to them. But at last, Pythagoras said that we will meet again. But in within couple of 2 years or something, he was no more. But they met. That meeting happened in the current life, that is C.W. Leadbeater's life as a Kutumi master. uh, so he did you remember that I said I will be meeting you? And that day when he reminded, he told the words of Pythagoras, and he reminded. So that is the summary. However, they couldn't meet the Pythagoras during the same incarnation. Meanwhile, Cleanus established the school. And also he mentioned that they will be starting a school, right? So Cleanus is disciple, Pythagoras disciple. He established the school, and there C.W. Beater's past life, he and his brothers were the first pupils. Then after that, he spent most of his time studying there, and he dedicated his life in teaching, and later he succeeded the position of the Cleanus. So this is the picture of Master Kuthumi, and this is one of the picture which I got about the school. There are lots of old Greek famous scientists, mathematicians and all in this. Now, after that, the early attitude, after a few years, almost spending 2,300 years in heaven, he was able to remember his past life about dreaming one house. Okay, as a C.W. Leadbeater used to tell his parents and all, he was getting a dream of a house. So that later he could see that house in real, like, okay, maybe this is a past life, so on. So he remembers on the past life, focusing on higher thought, leaded to lengthy period in the heaven world. So he spent lots of time, like 2003 years in the heaven. Despite spending over 2,300 years in the state, there was no clear memory of the acquired knowledge about reincarnation. Then later he remembered the mid 19th, that was the dream. That time there was a situation like about the religion and all. They were not they were a bit critical, materialism and skepticism about religious matters. He can remember that there was unshakable belief in God and an afterlife from childhood. So in childhood, he wanted to tell the people based on his dream that he was able to remember, but people were not convinced. He had difficulty in convincing. Later, his father, actually, it is not told him that you can't force people to understand with the past or your dreams. These cannot be the evidences. So he searched for the physical plain evidence. How can I show that there is afterlife, so on. And he undertook few case studies, and from a book, The Night Side of the Nature, from this book, and he when described so the author was Mrs. Crovis Knight Crovis. So this was a kind of a validation for him. He studied these books and he used to check for the evidences. So he had his own personal investigations. He proactively approached to investigate reports of ghosts and haunted house. Whenever he get information about that there is some house haunted or something, he used to go personally there
whenever appeared in newspaper, he would travel to the location, interview the witnesses, and personally attempt to encounter the alleged spectral phenomena. Means he wanted to see what is happening, but most of the time he was not successful. It was like he couldn't witness it. So despite many instances resulting in no noteworthy evidence or the ghost not appearing as desired, there were some occasional success that provided convicting direct evidences. Additionally, he also had some experiences in the highlands. Okay, so that was like second site, particularly in highlands. So after open mind and effort, it was possible for him to verify the genuineness of this phenomena about these investigations. Then he got entered into spiritualism. So the spiritualism wise, he heard about this senescence. Senescence is like a gathering, okay, report regarded reports of gathering or a session typically led by medium, during which people attempt to communicate with the spirits, entities, or the deceased people. That time there were a kind of a fraud also. Even that situation, he was able to experience some incidences which made him to realize that such mediums can be used. Now, however, he was prompted by an article suggesting a simple experiment involving a silk hat on a table. So this experiment was done by C.W. Leadbeater, his mother, and one young boy. They unexpectedly witnessed that a hat was able to move on a table without any apparent cause. Means there was no other force to move it. This fascinated CWL Leadbeater to investigate into the study of spiritualism, that and encountering various manifestations through senescence through this kind of group. Despite coming across, so as I mentioned before, though there were lots of frauds that time, but still he was able to get a genuine evidence over it. Became convinced that some of the phenomena were genuinely connected to the actions of the deceased. Now, he also went through some of the books. He personally witnessed numerous spiritualistic phenomena under the test conditions and explored his detailed investigation in the book titled The Other Side of the Death. Or the separate book was written by Henry S. Olcott. So that was spiritualism and theosophy. So these books were also a kind of a base for him in later when he joined theosophy, and he was able to see some things and he could get a kind of evidence to and also an acceptance for those beliefs. So later he encountered theosophy highlights his predisposition to accept like past knowledge, certain beliefs due to prior experience with the paranormal. Now, the next comes like meeting of Madame Blavatsky. So this story was actually told by one of his friends, C.W. Bater's friend. When he went on a voyage, his friend met Madame Blavatsky when he was in a voyage, and he was a officer. So he was trying to light the cigar in a force wind, and 3 times it went off. So Madame Blavatsky asked him, light it again. So when he lighted it, though wind was there, it was on, it wasn't off. So he was in shock, and he said, and he was about to go, and he said, we'll meet again. But Madame Blavatsky said, no, you will not come again because you will change your career. You will have another position, officer. So that moment, so he heard the first news about Madame Blavatsky, the founder of Theosophy, through stories told by a friend who had a remarkable encounter with her during a sea voyage. He saw Madame Blavatsky demonstrated unusual abilities such as lighting a match in a strong wind and making an accurate prediction about the first officer's career. These incidents, when he heard C.W. Leadbeater years later, when he came across A.P. Sennett's book, The Occult World. So there was mention of Madame Blavatsky earlier served as a so this story became a first-hand evidence of her extraordinary powers, and also again accepting about the theosophical truths eagerly and instantly. So with this, the first chapter is done. Thank you. Yes.
Yes, Mrinalji, is your video on? Yeah. Thank you. She finished right on time. So welcome मृणाल जी, और आज का जो ये विषय है उसे अपनी खूबसूरत मराठी में आप अनुवाद कीजिए। मृणाल जी बिलोंग करती हैं पूना लॉज से, और उन्होंने ज्वाइन किया था 2017 में। उसके अलावा ये न सिर्फ काफ़ी सारी इस तरह की डिबेट्स में और उसमें भाग लेती रहती हैं, बल्कि बहुत सारे थियोसॉफी के पूना लॉज के कार्यों में भी वो सहायता करती हैं। एमएससी जूलॉजी हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा इनकी सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि एक हुनर है, वो है कि ये प्राणिक हीलर भी हैं, और उसका जो एक अर्हत लेवल होता है वहाँ तक वे अ, उसकी पात्रता रखती है। तो आइए मृणाल जी, आप मराठी में अपना संवाद कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। त्रिवेणी के मंच पर आज CW लेडबीटर इनकी पुस्तक हाउ थियोसॉफी केम टू मी, उस पर मराठी अनुवाद प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए बंधु तरल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्रा जी, थैंक यू, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। Thank you, ma'am. Thank you. CW लेडबीटर यांचे पूर्ण नाव चार्ल्स वेबस्टर लेडबीटर. यांचा जन्म 16 फेब्रुवारी 1847 मध्ये इंग्लंडमध्ये झाला. त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. ते थिओसॉफिकल सोसायटीत कसे आले, तिथपासून थिओसॉफिकल सोसायटी जॉईन केल्यावर त्यांना सिद्धी प्राप्त होईपर्यंतचा त्यांचा प्रवास कसा झाला, याची रसाळ वर्णने प्रस्तुत पुस्तकात वाचायला मिळतात. थोडक्यात हे पुस्तक त्यांच्या आयुष्यातील छोट्या कालखंडाचे आत्मचरित्र कथन आहे. तर या पुस्तकातील पहिली 2 प्रकरणे आपण घेणार आहोत. ते म्हणतात, खऱ्या अर्थाने थिओसॉफीशी माझा संबंध अगदी पहिल्यांदा आला तो ख्रिस्तपूर्व 504 मध्ये, जेव्हा महान तत्वज्ञानी पायथागोरस यांना भेटण्याचा अद्भुत मान व आनंद मिळाला. त्यावेळी म्हणजे त्या जन्मात अथेन्स मधील युपॅट्रिडी कुटुंबात सुखवस्तू सुस्थिर सुधारणावादी घराण्यात त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांची ही भेट म्हणजे त्यांच्या तरुणपणातील सर्वात महत्वाची घटना होती, असे ते म्हणतात. आणि त्याचे असे झाले की ते म्हणतात, आमच्या एका नातेवाईकांनी मला माझ्याहून 1-2 वर्षांनी लहान असलेल्या भावासह जलप्रवासाला नेण्याची ऑफर दिली. हा व्यापारी प्रवास ग्रीक बेटे व आशियाई किनाऱ्यांवरून होता. अगदी आरामात विविध निसर्गरम्य ठिकाणे, सुंदर सुंदर मंदिरे पाहत जवळपास वर्षभर कार्यक्रम चालला. तशातच फिरत आम्ही सॅमोस बेटावर आलो, जिथे आम्हाला महान पायथागोरस भेटले. त्यावेळी ते बरेच वयोवृद्ध झालेले व मरणासन्न अवस्थेत होते. मॅग्ना ग्रेशिया येथील शाळा सोडून ते इथे सॅमोसला आले, जिथे त्यांनी आधी सुरुवात केली होती. तिथेच ते आयुष्यातल्या शेवटच्या वेळी आले, आणि त्यांना अशा प्रकारे पाहण्याची संधी प्रवासादरम्यान आम्हाला मिळाली. त्यांचे त्यावेळचे मुख्य शिष्य क्लेनियास म्हणजे आताचे मास्टर ज्वालकुन आमच्याशी मोठ्या दयाळूपणे वागले आणि आमच्या सर्व प्रश्नांची संयमाने उत्तरे दिली. पायथागोरियन तत्वज्ञानाची प्रणाली आम्हाला समजावून सांगितली. आम्हाला जी शिकवण दिली त्याने आम्ही खूप प्रभावित झालो आणि त्या गुरुकुलात जाण्यासाठी उतावीळ झालो. क्लेनियास यांनी सांगितले की लवकरच अथेन्स इथे शाळेची शाखा उघडणार आहे. तिथे असताना आम्हाला त्यांनी नीतितत्वे, पुनर्जन्माचा सिद्धांत आणि संख्यांचे गूढशास्त्र याविषयी बरेच सांगितले. लवकरच आमचे व्यापारी जहाज पुन्हा प्रवासासाठी तयार झाले. आम्हाला मोठ्या खेदपूर्वक पायथागोरस आणि क्लेनियास यांचा निरोप घ्यावा लागला. निरोप घ्यायला गेलेलो असताना त्या वयोवृद्ध तत्वज्ञानी पुरुषाने आशीर्वाद दिले व जोरकसपणे खात्रीने म्हणाले, आपण पुन्हा भेटणार आहोत. त्यानंतर 1-2 वर्षातच त्यांच्या निधनाची वार्ता आम्ही ऐकली. आम्ही आश्चर्य करीत राहिलो की त्यांच्या शेवटच्या शब्दांचा उच्चार त्यांनी काय म्हणून केला असेल. परंतु या जन्मात
महात्मा कुथुमी यांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांनी तो प्रसंग माझ्या स्मृतीपटलावर पुन्हा आणून म्हणाले, मी म्हणालो नव्हतो का की आपण पुन्हा भेटणार आहोत. पायथागोरस यांच्या मृत्यूनंतर क्लेनियास यांनी त्यांचे वचन पाळले आणि अथेन्समध्ये तत्वज्ञानाची शाळा उभारली. अर्थातच मी व माझा भाऊ त्यांचे पहिले विद्यार्थी होतो. त्यांच्या शिकवणुकीकडे खूप प्रमाणात लोक आकर्षित झाले आणि तत्वज्ञानाचा अभ्यास अगदी वरच्या पातळीवर पोहोचला. कुटुंबाचे पालनपोषण करताना अख्खे आयुष्य तत्वज्ञानाचा अभ्यास करणे व शिकवणे यांना वाहून घेतले आणि अखेर क्लेनियास यांच्या पश्चात ते त्यांच्या पदावर आरूढ झाले. उच्च विचारांवर लक्ष केंद्रित करून स्वर्गलोकात दीर्घ कालावधीसाठी म्हणजे 2300 वर्षांहूनही अधिक काळ घालवल्यानंतरही पुनर्जन्मानंतर आधी प्राप्त झालेल्या ज्ञानाची कोणतीही स्मृती त्यांना नव्हती. त्यानंतर ते म्हणतात, 19व्या शतकाच्या मध्यात जगात भौतिकवाद व धार्मिक बाबींबद्दल संशय बोकाळलेला होता. परंतु लहानपणापासून C.W. लेडबीटर यांना देवावर अढळ विश्वास होता. देव आहे आणि तो चांगला आहे आणि मृत्यू म्हणजे जीवनाची समाप्ती नाही. तसेच लहानपणी वारंवार एक घर त्यांना स्वप्नात दिसे. हळूहळू ती स्वप्ने कमी झाली, परंतु आयुष्यात बऱ्याच नंतर मास्टरांनी एक घर दाखवले जे त्यांच्या गतजन्मातील निवासस्थान होते आणि तेच हे घर होते जे त्यांना स्वप्नात वारंवार दिसायचे. ते पुढे सांगतात, मी तुम्हाला आधीच सांगितले की मृत्यूनंतरच्या जीवनावर माझा प्रगाढ विश्वास होताच, परंतु केवळ वैयक्तिक समजुतींच्या आधारे इतरांना पटवून देण्यात अडचण येत होती. म्हणून त्यांनी मृत्यूनंतरचे भौतिक पुरावे शोधले. ते नेहमीच आध्यात्मिक जीवन, निसर्गातील गूढ तत्वे यात रस घ्यायचे. वर्तमानपत्रात भूताखेतांच्या बातम्या आल्या की त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी करत, साक्षीदारांची मुलाखत घेत आणि वैयक्तिकरित्या कथित घटनांचा सामना करण्याचा प्रयत्न करीत. सुरुवातीला त्यांना आध्यात्मिक ज्ञान नव्हते की ज्याद्वारे अशा गूढ प्रकरणांचा छडा लावला जाईल. त्यांना हे ठाऊक नव्हते की असे काही सभा संमेलन असते की जिथे माध्यमांद्वारा मृत व्यक्तींशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. तथापि तशा प्रकारचा एक लेख त्यांच्या वाचनात येऊन त्यांनी एक साधा प्रयोग केला. ते, त्यांची आई व एक 12 वर्षांचा मुलगा टेबल भोवती बसले. तिघांनी टेबलवर ठेवलेल्या रेशमी टोपीवर हात ठेवले आणि थोड्याच वेळात ती आपोआप हलायला लागली. त्या तिघांनीही ती हलवली नव्हती. त्यावेळी माध्यमांबद्दल त्यांना काहीच माहिती नव्हती. वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी सत्यता पडताळून पाहिली, तेव्हा ते आपोआप घडते व कुठली तरी शक्ती हे कार्य करते हे लक्षात येऊन अचंबित झाले. या घटनेने मोहित होऊन C.W. लेडबीटर यांनी अध्यात्मवादाच्या अभ्यासात तपास केला, माध्यमांसह विविध अभिव्यक्तींचा सामना केला. मग त्यांना खात्री पटली की काही घटना मृत व्यक्तीच्या कृतींशी खऱ्या अर्थाने जोडलेल्या आहेत. त्यांनी पर्सनली परीक्षा घेण्याच्या परिस्थितीत असंख्य आध्यात्मिक घटना पाहिल्या आणि मग द अदर साइड ऑफ डेथ या पुस्तकात, आणि त्या पुस्तकाचा छोटासा भाग आहे स्पिरिच्युअलिझम अँड थिओसॉफी या लेखात, तपशीलवार अन्वेषण केले. आधीच्या अलौकिकतेच्या अनुभवांमुळे अशा प्रकारांवर विश्वास ठेवण्याची त्यांची वृत्ती बळावली, नाहीतर त्यांनी अशा गोष्टींवर संशय घेतला असता. पुढील आयुष्यात त्यांनी संशोधने केली व शोध लावले, ज्याची सुरुवात अशी आधीपासूनच झालेली होती. थिओसॉफीच्या महान संस्थापक मॅडम ब्लावट्स्की यांच्याबद्दल अगदी पहिल्यांदा त्यांच्याबद्दलची कथा मित्राद्वारे ऐकली, ज्याची समुद्री प्रवासात त्यांच्याशी भेट झाली होती. त्या मित्राने पाहिले की H.P. ब्लावट्स्की यांनी असामान्य क्षमतांचे प्रात्यक्षिक केले, जसे की वादळी वाऱ्यावर त्यांनी काडीपेटीतील काडी न भिजता पेटवली गेली होती. तसेच एका ऑफिसरचे कारकिर्दीतील भाकीत वर्तवले होते. या सर्व घटनांचा C.W. लेडबीटर यांच्यावर परिणाम झाला. काही वर्षानंतर जेव्हा मिस्टर एपिसिनेट यांचे द ऑकल्ट वर्ल्ड
त्यांच्या हाती पडले की ज्यात HP बींच्या नावाचा उल्लेख होता. त्यांना त्यांच्या अलौकिक सामर्थ्यांच्या घटना आठवल्या. त्यामुळेच ते थिओसॉफीतील सत्य उत्सुकतेने आणि त्वरित स्वीकारण्यास प्रवृत्त झाले. धन्यवाद. इथे पहिला भाग संपतो आहे. बहुत बहुत धन्यवाद. और पूनम जी अभी हैं जी. बहुत बहुत धन्यवाद मिलाल जी. और वाकई में एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आपने पूरा इसका अनुपात कर दिया. जस्ट गिव मी 1 मिनट. पूनम जी वेलकम. आप भागते दौड़ते आई हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए. और एक बार और कहूँगा कि चित्रा जी ने वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से PPT तैयार किया है, जिससे कि बहुत ही आनंद रहा. पूनम जी का परिचय दे दूं तो वे मुंबई में ही रहती हैं और बिलोंग करती हैं घाटकोपर लॉज से. वे पूरा एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल की कोच हैं और गर्भ संसार की भी कोच हैं और डाइटिशियंस हैं, नेचुरोपैथ हैं और सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर हैं और योगा और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं. तो इतने सारे गुणों के साथ वे अपनी तथास्तु होलिस्टिक जो हेल्थ सेंटर है उससे वो लोगों को हील करती हैं और इस तरह से वो एक तरह से बहुत बड़ी सेवा तो वो कर ही रही हैं. उन्होंने हर कल्चर के अंदर जो एक यूनिक स्पेशल चीज़ रहती है उसको भी काफ़ी लोगों में अवेयरनेस करने के लिए साइंस के द्वारा लोगों को संबंध करती हैं. काफ़ी लंबा उनका एक परिचय है, तो समय को वो देखते हुए मैं उनसे कहूँगा कि वे आगे बढ़ें और उनकी एक दिन हम लोग ज़रूर उनकी जो ये खूबियाँ हैं उस पर भी एक त्रिवेणी मीटिंग कर सकते हैं. पूनम जी ओवर टू यू पार्ट 1 के लिए. धन्यवाद. Thank you so much, Taral ji, and thank you Theosophical Society and especially Taral ji for giving opportunity. मैं हिंदी में पार्ट 1 पढ़ने जा रही हूँ. चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं. 504 ईसा पूर्व में CWL का जन्म एथेंस में यूपिटेट्स परिवार में हुआ था और वह अपने छोटे भाई के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकला था. ग्रीक द्वीपों और एशियाई तटों की खोज के दौरान उन्हें समोस में वृद्ध दार्शनिक पाइथागोरस का सामना करना पड़ा. पाइथागोरस अपने जीवन के अंत के करीब माइग्रो ग्रेशियाई में अपने स्कूल छोड़ने के बाद समोस लौट आए थे. उनके शिष्य क्लेनिस अब मास्टर डिज्वेल कुल थे. क्लेनास ने उन्हें धैर्यपूर्वक पाइथागोरस दर्शन के प्रश्न समझाए. उन्हें केवल व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर दूसरों को समझाने में कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन के भौतिक साक्ष्य की तलाश की और सत्यपन के लिए श्रीमती क्रो के नाइट साउंड ऑफ नेचर में वर्णित मामलों का अध्ययन किया. उन्होंने भूतों और प्रेतवाधित घेरों की रिपोर्टों की जांच के लिए सक्रिय रूप से संपर्क किया. जब भी ऐसे वृत्तांत अखबारों में छपते थे तो वह उस स्थान की यात्रा करते थे, गवाहों का साक्षात्कार लेते थे और व्यक्तिगत रूप से कथित वर्णक्रमीय घटनाओं का सामना करने का प्रयास करते थे. कई उदाहरणों के बावजूद कोई उल्लेखनीय सबूत नहीं मिला या भूत वंचित रूप से प्रकट नहीं हुआ. कभी कभार ऐसी सफलताएं मिली जिन्होंने प्रत्यक्ष सबूत प्रदान किए. इसके अतिरिक्त उन्होंने विशेष रूप से दूसरी दृष्टि के मामलों की जांच की.
हाईलैंड्स में यह पता चला कि खुले दिमाग और प्रयास से इन घटनाओं की वास्तविकता को सत्यापित करना संभव था। शुरू में उन्होंने आध्यात्मवाद और आलोचनात्मक मानसिकता वाले सभा या सत्र की रिपोर्ट आम तौर पर एक माध्यम के नेतृत्व में, जिसके दौरान लोग आत्माओं, संस्थाओं या मृतक के साथ संवाद करने का प्रयास करते हैं, का कोई ज्ञान नहीं था। हालांकि उन्हें एक लेख द्वारा प्रेरित किया गया जिसमें एक मेज पर रेशम की टोपी से जड़े एक सरल प्रयोग का सुझाव दिया गया। वह और उसकी मां तथा एक युवा लड़के ने अप्रत्याशित रूप से टोपी और मेज के बिना किसी स्पष्ट कारण को हिलते हुए देखा। इस घटना से रोमांचित होकर CWL ने आध्यात्मवाद के अध्ययन की जांच की, माध्यमों के साथ सत्रों के माध्यम से विभिन्न अभिव्यक्तियों का सामना किया। धोखाधड़ी और संदेह का सामना आने के बावजूद CWL आश्वस्त हो गया कि कुछ घटनाएं वास्तव में मृतक के कार्यों से जुड़ी थी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से परीक्षण स्थितियों के तहत कई आध्यात्मिक घटनाओं को देखा। और द अदर साइड ऑफ डेथ नामक पुस्तक या स्पिरिचुअलिज्म एंड थियोसॉफी नामक एक अलग से प्रकाशित खंड में अभी विस्तृत जांच का पता लगाया। बाद में उनका सामना थियोसॉफी से हुआ, जो असाधारण के साथ पूर्व अनुभव के कारण कुछ मान्यताओं को स्वीकार करने की उनकी प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से परीक्षण स्थितियों के तहत कई आध्यात्मिक घटनाओं को देखा और द अदर साइड ऑफ डेथ नामक पुस्तक या स्पिरिचुअलिज्म नामक एक अलग प्रकाशित खंड में अपनी विस्तृत जांच का पता लगाया। बाद में उनका सामना थियोसॉफी से हुआ, जो असाधारण के साथ पूर्व अनुभव के कारण कुछ मान्यताओं को स्वीकार करने के बाद उनकी प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। मैडम ब्लेवेस्की का उल्लेख करते हुए पहले की कहानियां उनकी असाधारण शक्तियों से प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में काम करती थी, जो उन्हें थियोसॉफिकल सच्चाइयों को उत्सुकता से और तुरंत स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती थी। चैप्टर 1 भाग 1 यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चेतना जी, आपसे गुजारिश है कि आप भाग Okay. के लिए उपस्थित रहिए। हाँ, आपका वीडियो ऑन हो गया। Okay. आप you can go ahead with the presentation. Okay. So the second part, the second part includes how I joined, how Leadbeater joined it. So we saw that in the previous, there was a name mentioned, A.P. Sennett's Book of the Occult World. So from there, he had some glimpses of profound philosophical system and some inner science within that book. So he wanted to know more information and he wanted to go to London branch. So this is the picture of one of the London branch of Theosophical Society, but he couldn't get the address. So he faced challenges in locating this branch and didn't find any means to find. Later, he followed those Sennett's advice to join the society, but that was written on one of the magazine that join this society like that. So he mentioned in that there was a name mentioned, Dr. Anna Kingsford. So this is one of the picture I got it. So this is the AP Sennett's picture, and that Dr. Anna Kingsford was a president of that London Lodge of Theosophical Society. He wrote letters to her, but maybe because of her travel, there were lots of delays to get any response.
but he was searching. Later, fortunately, he obtained the needed information from a beautiful printed circular was there. There, it was mentioned the secretary in London and the address was written. But there was one line mentioned that if you want to join Theosophical Society, you have to have a seconded by 2 members. Someone should make them join that place, like a kind of second-hand person to who is already a member of Theosophical Society was supposed to join in that form. So this is one of the book written by Anna Kingsford. So you will see in the future slides about this book too. So then while he wanted to join, there is he faced this challenge that how will I get someone who is existing member. Then his desire to join Theosophical Society faced challenges due to requirement of being proposed and seconded by existing members. After reaching out to the secretary and Mr. Kirby, okay, he is actually also the author of etymology. So there were some names of Kirby coming in future, but in Theosophical Society, these names do come. So Mr. Kirby means one who was author of the etymology book, and he was directed by Mr. A.P. Sennett and also later about Mr. G.B. Finch. These 3 people were involved, and they mentioned that you can give their name, so on. So C.W. Leadbeater contacts Mr. Sennett. They discover that Mr. Sennett is indeed the author of the book. So they said, okay, you please meet Mr. Sennett. And later when he met him, he realized that he was the same author whose book he was very impressed. After, despite the invitation to meet Mr. Sennett, he was not so happy, like encouraging to make Leadbeater to join, because he was a kind of a clergyman, one culture like Christianity based priest kind of. So he said he didn't have any much of positive impression on him. So he said, I need to talk to my committee. So joining the society, I need to have discussion with the council before decision is made. So what he did is he had a meeting. So Leadbeater received a letter from Senate that stating that majority of the council agreed to their admission into Theosophical Society. Following Mr. Sennett's advice, he filled the necessary forms. When he was joining, he added them, few people as the second-hand members, and along with them, additional members, one professor and Mr. Cox also were joining it to the society in a crowded event. So there was one event, Mrs. Sennett was also there. In their drawing room, they joined and they received the signs and passwords for recognition once they joined. So Leadbeater attended the lodge meetings regularly from then on after joining. Then one day after dining, Mr. Sennett's, Leadbeater attended lodge meetings regularly, often dining at Mr. Sennett's house. So usually used to attend and he was having dined there. The discussions revolved around new theosophical teachings. So there were books around and there were new things. And for the new people who had joined, there was a lack of clear authority to counsel. Conflicting statements created challenges. So how to be a pupil? There were few suggestions that was little contradicting and people had no clarity. So that is the suggestions of aspiring to become a pupils of great adept masters stirred some surprises. When they said, okay, this is the steps, they were shocked. So the London Lodge had limited sources. How do they get the resources? Only from the Sennett's books and Madame Blavatsky's. One of the book was mentioned, ISIS Unveiled, and Dr. Anna Kingsford's The Perfect Way. So these were the only. So later, Master Kutumi expressed dissatisfaction for their efforts, and he suggested that he will send one of his disciples from India to assist them and to answer their questions. So that came like introduction to Mr. M.M. Chatterjee or Mohini Mohan Chatterjee. So he was a young lawyer from Calcutta. He arrived in London with Colonel Olcott in earlier 1884 to assist the London Lodge. His addresses provided valuable insights into the path of initiation and its requirements. So people who want to join, their path of initiation and some requirements he was able to give. Later, this was documented in transactions of the London Lodge.
During this first appearance, Mr. Sennett's reception, E and Colonel Olcott greeted around 200 people individually. And there were some notable people, that is Mr. Oscar Wilde, made a distinctive impression with his unique attire and stage whispered the comments to Mrs. Sennett. Mohini Ankas, actually he was a Brahmin person and Indian. He was not accustomed to the Western culture. While handshaking also he was little hesitant, though he was so discomfort feeling, but whatever questions were asked, he was able to answer, and that evening he was like a hero to answer all the questions, and people were very happy. Many of the attendants regarded M.M. Chatterjee with a great respect and admiration during his first appearance at Mr. Sennett's reception. So this is Mrs. Sennett's picture, which I got it. So AP Sennett's wife, Mrs. Sennett. So that is what we understood from there. Then here comes the next sub chapter, that is Mr. Eglinton. So during the course of investigation of spiritualism, Leadbeater interacted with various mediums. So these are like the deceased people, you can say, mediums, including Mr. Eglinton. So this picture I received, I googled and found this picture, Mr. Eglinton. Despite stories against him, so people had stories that if you use this medium is not so nice, but Leadbeater felt little different about him, that he's straightforward and courteous person. So Eglinton had several controls. He could control a red Indian girl named Daisy and a tall Arab named Abdullah, who produced remarkable phenomena. So during conversation with control of Ernest, so the name comes, one more is Ernest. So he wanted to use them to send the letters to the masters. Okay, so he proposed that he want to send a letter to the masters of wisdom through Ernest. But there was initial resistance from the spirits, especially Daisy. She was not liking Sennett. But Leadbeater insisted on consulting Mr. Sennett before proceeding. So he asked them, please talk to Sennett and then you proceed. Ultimately, Sennett encouraged Leadbeater to accept the offer, leading to the plan of sending the letters to Ernest for the Masters of Wisdom through Ernest. Okay, but so this was one of the samples, usually how the letters will be. So Leadbeater wrote 3 letters. First letter was addressed to Master Kuthumi KH, expressing a desire to become a pupil. So that was written. This is what he wanted to send to the master. The second letter was to Ernest, asking him to deliver the first letter, and the third letter was for Eglinton, requesting him to put the second letter in his box. So Mr. Eglinton confirmed the delivery of the note to Ernest, but when CWL received a reply, the first letter to the master had vanished, and only the second letter was inside, stating that the master had received the letter. Actually, what happened is one of the medium didn't deliver the letter. So later in this, they come to know, master replies that your letter was not received to me, but I read the letter when you already wrote it. So he also got the response that is there in the book in more detail. So despite waiting for months, no direct response. So this was not a direct response, came from Ernest. So however, 6 months later, master provided an answer indirectly, that is through another person that was very detailed written. And he says, I have seen your letter and I have replied what you have to do to be a pupil, and all those were written, and he asked him to proceed to act accordingly. So with this done, and this is one of the reference from where this book online is available in English. So that's it with the second chapter. Thank you for listening, and I hope I have made it clear with the pictures. If any mistakes are there, please let me know and I will correct it for the future. And thank you. Thank you, sir. So much, Chitraji. I must say that it was really a wonderful presentation. Once we complete, I will brief the entire audience what this is all about. Now over to Mrinalji for Marathi. Thank you. Thank you, Taralji. Thank you, Chaitraji.
आपण पहिल्या भागामध्ये लेडबीटर सरांचे पूर्वजन्माचे काही किस्से, आणखीन या जन्मातील त्यांचं बॅकग्राऊंड पाहिलं की जे थिओसॉफीसाठी कसं अनुकूल होतं. आता ऍक्च्युअली थिओसॉफिकल सोसायटी त्यांनी जॉईन करण्यासाठी काय काय केलं किंवा त्यांना किती कष्ट पडले हे आता आपण या दुसऱ्या भागामध्ये पाहणार आहोत. पहिलं थिओसॉफिकल पुस्तक मिस्टर AP सिनेट यांचं द ऑकल्ट वर्ल्ड त्यांच्या वाचनात आलं. मी ते भारावून गेले. त्यात गहन तात्विक प्रणाली व आंतरिक विज्ञानाची झलक होती. त्यांना अधिक माहिती हवी होती म्हणून थिओसॉफिकल सोसायटीच्या लंडन ब्रँचला जायचे होते. परंतु शाखा शोधण्यात त्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागला. शोधण्याचे कोणतेही साधन सापडले नाही. पुस्तकाच्या शेवटी सिनेट यांनी सोसायटीत सामील होण्यासाठी सल्ला दिला होता. लंडन येथील थिओसॉफिकल सोसायटीचा उल्लेख केला होता पण पत्ता नव्हता. अखेर योगायोगाने त्यांना डॉक्टर ॲना किंग्सफोर्ड ज्या प्रेसिडेंट होत्या लंडन लॉजच्या त्यांचा पत्ता मिळाला. त्यांचं एक आध्यात्मिक मासिक मिळालं पण त्या सुट्टीवर गेल्या असल्यामुळे त्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. तरी पण एका सुंदर छापील परिपत्रकातून आवश्यक माहिती CW लेडबीटर यांना मिळाली. या परिपत्रकाने लंडन मधील सचिवांचा म्हणजे मिस्टर किर्बी यांचा पत्ता मिळाला होता. तसेच सोसायटीमध्ये सामील होण्यासाठी आवश्यक रूपरेषा दिली होती. त्यात 2 सदस्यांनी CW लेडबीटर यांचा प्रस्ताव मांडणे व समर्थन देणे आवश्यक होते. CW लेडबीटर यांच्या समर्थनार्थ कोणीच नसल्याचे त्यांनी सेक्रेटरी मिस्टर किर्बी यांना कळवले. त्यांचा अगदी उशिराने रिप्लाय आला की मिस्टर AP सिनेट व मिस्टर GB फिंच यांच्याशी बोलावे. पूर्वी कम्युनिकेशन साठी पत्रव्यवहाराशिवाय दुसरा उपाय नव्हता आणि पत्रव्यवहार जेव्हा व्हायचे तेव्हा त्यांची उत्तरं सुद्धा फार उशिराने मिळायची. तर अल्फ्रेड पर्सी सिनेट हे भारतात पायोनियर या इंग्लिश डेलीचे एडिटर होते. सिनेट यांची भेट सहजासहजी लगेच झाली नाहीच आणि ते जेव्हा त्यांना भेटायला गेले तोपर्यंत ऑकल्ट वर्ल्ड यानंतरचं सिनेट यांचं एसोटेरिक बुद्धिझम हे दुसरं पुस्तकही प्रकाशित होऊन CWL यांच्या वाचनात आले. दोन्ही पुस्तकांची CW लेडबीटर यांनी अनेक पारायणे केली. त्यामुळे कधी एकदा थिओसॉफिकल सोसायटी जॉईन करतो असे त्यांना झाले होते. कारण कुठल्याही गोष्टीच्या मुळापर्यंत जायची त्यांची सवय असल्याने ज्या महात्म्यांकडून सिनेट यांना ज्ञान मिळून त्यांनी लिखाण केले त्या लिखाणाच्या वाचनाने त्यांची ज्ञानपिपासा अजून वाढली व पुस्तकाच्या शेवटी सिनेट यांनी लिहिले होते की तिबेट मधल्या श्वेत संघाशी संपर्क साधण्याचा एकच मार्ग तो म्हणजे थिओसॉफिकल सोसायटी जॉईन करणे. तेव्हा उत्सुकांनी आणि इच्छुकांनी रजिस्टर करा. AP सिनेट यांच्या भेटीच्या वेळी CW लेडबीटर चर्चमध्ये क्लर्जीमॅन होते. त्यांचा पेशा वगैरे पाहून सिनेट यांना शंका आली व त्यांनी क्लिअर सांगितले की सोसायटीची मते काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. पूर्वग्रह विरहित चर्चा इथे चालतात. कारण ते पाद्री असल्याने साधारणपणे धार्मिक कट्टरता त्यांच्यात असते व सहजासहजी नवीन वेगळी मते ते मान्य करीत नाहीत असे सिनेट यांचे विचार होते. परंतु मुळात संशोधक वृत्तीच्या CW लेडबीटर यांना ही पद्धत स्वीकारणे अडचणीचे वाटले नाही. तरीही सोसायटीत सभासदत्व देण्याच्या निर्णयाआधी कौन्सिलशी चर्चा करणे आवश्यक आहे असे सिनेट म्हणाले. त्यानंतर त्यांना सिनेट यांचे बऱ्याच दिवसांनी पत्र मिळाले. त्यात त्यांनी म्हटले की परिषदेतील बहुसंख्य सदस्यांनी थिओसॉफिकल सोसायटी मधील त्यांच्या प्रवेशास सहमती दर्शवली आहे. मग आवश्यक फॉर्म भरून सिनेट यांनी त्यांना समर्थन दिले. पुढे मिस्टर GB फिंच यांना भेटल्यावर त्यांनी अर्जाला अनुकूलतेने दुजोरा दिला. अखेर साधारण 200 लोकांच्या हजेरीत थिओसॉफिकल सोसायटी जॉईन केली. त्यात थॅलियमचा शोध लावणारे प्रोफेसर क्रुक्स, मिसेस क्रुक्स असे बडे सायंटिस्ट आणि मोठ्या विद्वान प्रसिद्ध व्यक्ती होत्या जसे की प्रोफेसर मायर्स, CC मेसी, स्टॅन्टन मोझेस. लेडबीटर, मिसेस क्रुक्स व प्रोफेसर यांना मिसेस सिनेट यांच्या ड्रॉइंग रूम मध्ये आणण्यात आले. त्यांना ओळख म्हणून चिन्हे व पासवर्ड मिळाले.
C.W. लेडबीटर लॉज मीटिंग्सना नियमित हजेरी लावत. अनेकदा सिनेट यांच्या घरी ते जेवायला जात. तिथे थिओसॉफीतल्या विविध चर्चा होत. तुटपुंज स्टडी मटेरियलवरच तिथे चर्चा जोडल्या जात. कारण तोपर्यंत सिनेट यांची 2 पुस्तकं आणि मॅडम ब्लावत्स्की यांचं आयसिस अनवेल्ड प्रसिद्ध झालं होतं. तसेच ॲना किंग्सफोर्ड यांचं द परफेक्ट वे हेही पुस्तक होतं. ह्या 2-4 पुस्तकांवरच तिथे चर्चा वगैरे होत आणि कुणाला पूर्ण नॉलेज तिथे नव्हतं. अजून डॉक्टर ॲनी बेझंट यांचा तिथे प्रवेश झाला नव्हता. पण फार इंटरेस्टिंग विषय तिथं चालायचे, जसं प्लॅनेटरी चेन्स, डिफरंट प्लेन्स ऑफ नेचर, कॉन्शियसनेस वगैरे वगैरे. आणि प्रत्येकाला महात्म्यांचा चेला बनण्याची इच्छा असायची व तशा चर्चा चालायच्या. मग ह्या सगळ्या प्रयत्नांवर महात्मा कुथुमी यांनी समाधान व्यक्त केलं आणि या सदस्यांच्या मदतीसाठी भारतातून एक चेला पाठवण्याचे वचन दिले. मोहिनी मोहन चटर्जी हे कलकत्त्याचे एक तरुण वकील लंडन लॉजला मदत करण्यासाठी 1984च्या सुरुवातीला कर्नल ऑलकॉट यांच्यासोबत लंडनला आले. त्यांच्या भाषणांतून प्रथम दीक्षेचा मार्ग व त्यासाठी आवश्यक गोष्टी स्पष्टपणे सर्वांना कळल्या. नंतर लंडन लॉजच्या व्यवहारात दस्तऐवजीकरण केले गेले. मिस्टर सिनेट यांच्या स्वागत समारंभात पहिल्यांदा हजर असताना मोहिनी मोहन चटर्जी आणि कर्नल ऑलकॉट हे सुमारे 200 लोकांना एका मागोमाग एक भेटले. उल्लेखनीय म्हणजे मिस्टर ऑस्कर वाईल्ड यांनी त्यांच्या अनोख्या पोशाखाने आणि मिस्टर सिनेटना रंगमंचावर कुजबुजलेल्या टिप्पणीने एक विशिष्ट छाप पाडली. ब्राह्मण म्हणून पाश्चात्य चालीरीतींशी अनोळखी असलेल्या मोहिनी मोहन चटर्जींनी अस्वस्थतेने गर्दीची उत्साही हातमिळवणी सहन केली. अपरिचित असूनही त्यांनी संयमाने असंख्य प्रश्नांची उत्तरे दिली आणि त्या संध्याकाळचा नायक म्हणून ते उदयास आले. अनेक उपस्थितांनी मोहिनी मोहन चटर्जी यांना सिनेट यांच्या स्वागत समारंभात त्यांच्या पहिल्या उपस्थितीत आदराने आणि कौतुकाने पाहिले. अध्यात्मवादाच्या शोधादरम्यान तपासादरम्यान C.W. लेडबीटर यांना मिस्टर एग्लिंग्टन सह विविध माध्यमांशी संवाद साधायला मिळाला. मिस्टर एग्लिंग्टन यांच्या विरोधात कथा असूनही C.W. लेडबीटर यांना एग्लिंग्टन सरळ व विनम्र असल्याचे आढळले. एग्लिंग्टनच्या ताब्यात डेझी नावाची रेड इंडियन मुलगी व अब्दुल्ला नावाचा उंच अरब माणूस होता, ज्याने उल्लेखनीय घटना घडवल्या. अर्नेस्ट नावाचा तिसरा स्पिरिट क्वचितच भौतिक देहात प्रकट व्हायचा. तो चांगला शिकला सवरलेला होता. अर्नेस्टशी संभाषणादरम्यान C.W. लेडबीटरनी त्याच्याद्वारे महात्म्यांना पत्र पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला. आत्म्यांकडून सुरुवातीच्या प्रतिकारानंतर विशेषतः डेझी, जिला मिस्टर सिनेट नापसंत होते, C.W. लेडबीटरने पुढे जाण्यापूर्वी मिस्टर सिनेटचा सल्ला घेण्याचा आग्रह धरला. शेवटी सिनेट यांनी C.W. लेडबीटरना ऑफर स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले, ज्यामुळे मास्टर्स ऑफ विजडम साठी अर्नेस्टला पत्र पाठवण्याची योजना तयार झाली. मग C.W. लेडबीटर यांनी 3 पत्रे लिहिली. पहिलं पत्र मास्टर KH यांना उद्देशून. त्यात त्यांचा शिष्य बनण्याची इच्छा व्यक्त केली. सर्व परिस्थिती सांगून 7 वर्षे भारतात राहून प्रोबेशनरी पिरियड पूर्ण करणे सक्तीचे आहे का असे विचारले. हे पत्र छोट्या लिफाफ्यात घालून काळजीपूर्वक सील केले. मग हे पत्र अर्नेस्टला लिहिण्याच्या पत्रात बंद केले, ज्यात अर्नेस्ट याने त्याचे वचन पूर्ण करण्याची त्याला आठवण केली आणि C.W. लेडबीटर साठी हे पत्र पाठवण्यास सांगितले, तसेच उत्तर आणण्यासही. दुसरे पत्रही पहिल्याप्रमाणे सील केले आणि तिसऱ्या पत्रात टाकून त्याच्या पेटीत टाकायला सांगितले. बऱ्याच दिवसांनी C.W. लेडबीटरना उत्तर मिळाले. तेव्हा मास्टरना लिहिलेले पत्र गायब झाले होते व मास्टरना पत्र मिळाले आहे असे सांगत फक्त दुसरे पत्र आत होते. अनेक महिने प्रतीक्षा करूनही अर्नेस्ट कडून थेट प्रतिसाद मिळाला नाही. तथापि 6 महिन्यानंतर मास्टरनी अप्रत्यक्षपणे उत्तर दिले. त्यात काय लिहिले याची जाणीव C.W. लेडबीटर यांना होती व त्यानुसार ते कार्य करण्यास पुढे सरसावले. अशा प्रकारे हाऊ थिओसॉफी केम टू मी
हे या 2 प्रकरणांमधून आपल्याला C.W. लेडबीटर यांनी आपल्याला सांगितले आहे. आणि पुढे त्यांचा प्रवास पुढच्या प्रकरणांमध्ये आपल्याला दिसतो, जो त्यांनी जी सायकिक ट्रेनिंग घेतली तिथपर्यंतच ते प्रकरण आहेत पुस्तकात. धन्यवाद. थैंक यू। मैं श्रोताओं को बता दूं कि हम लोग ये जो पुस्तक है इसके पहले 2 चैप्टर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यही 3 लोगों की टीम शायद आगे जैसे जैसे चेत्रा जी तैयार करती जाएंगी 2-2, 3-3 चैप्टर्स, हम एक पूरी किताब को पहली बार त्रिवेणी में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ऑफ कोर्स इन शॉर्ट, लेकिन कम से कम हर चैप्टर वाइज हम ये जान पाएंगे कि किसमें क्या लिखा है। ओवर टू यू पूनम जी, हिंदी में आप पार्ट 2 कीजिए। थैंक यू। अध्याय 2 पे जाएंगे। थियोसॉफी से उनका परिचय एपीसी नेट की पुस्तक दी ऑकल्ट वर्ल्ड के माध्यम से हुआ। पुस्तक के भीतर एक गहन दार्शनिक प्रणाली और आंतरिक विज्ञान की झलक मिली। वह अधिक जानकारी चाहते थे, इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की लंदन शाखा में जाना चाहते थे, लेकिन शाखा ढूंढने में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोई रास्ता नहीं मिला। बाद में उन्होंने सोसाइटी में शामिल होने के लिए सीनेट की सलाह का पालन किया, लेकिन संजोग से उन्हें एक आध्यात्मिक पत्रिका मिली जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के लंदन लॉज के अध्यक्ष डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड का उल्लेख था। डॉक्टर किंग्सफोर्ड की अनुपस्थिति के कारण प्रतिक्रिया प्राप्त करने में देरी के बावजूद उन्होंने एक सुंदर मुद्रित परिपत्र से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस परिपत्र में लंदन के सचिव का पता प्रदान किया गया था और सोसाइटी में शामिल होने की आवश्यकता से रेखांकित। एक मिनट। चैत्रा जी और पूनम जी दोनों के साथ एकदम यंग थियोसॉफिस्ट है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए जी, प्लीज आगे बढ़िए। जी हाँ, किंग्सफोर्ड के इस परिपत्र में लंदन में सचिव का पता प्रदान किया गया और सोसाइटी में शामिल होने की आवश्यकता से रेखांकित किया गया था, जिनमें से 2 सदस्य द्वारा प्रस्तावित और सामर्थिक होना शामिल था। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल होने की उनकी इच्छा को मौजूदा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और समर्थित होने की आवश्यकता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सचिव श्री किर्बी तक पहुंचने के बाद और श्री एपी सीनेट या श्री जेबी फिंच के निर्देशित किए जाने के बाद CWL लीडर बोर्ड ने श्री सीनेट से संपर्क करता है। उन्हें पता चलता है कि श्री सीनेट वास्तव में उस पुस्तक के लेखक है जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। मिलने के निमंत्रण के बावजूद श्री सीनेट ने CWL लीडर बीटर एक पादरी के समाज में शामिल होने और निर्णय लेने से पहले परिषद के साथ चर्चा करने की आवश्यकता के बारे में अपनी भावना व्यक्त की। बाद में CWL को श्री सीनेट से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि परिषद में अधिकांश लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी में उनके प्रवेश के लिए सहमत है। श्री सीनेट की सलाह के बाद उन्होंने आवश्यक फॉर्म भरे और श्री सीनेट ने उन्हें सदस्यता के लिए प्रस्तावित किया। उन्हें श्री जीबी फिंच से मिलने की सलाह दी गई, जिन्होंने उनके आवेदन का समर्थन किया। CWL कुछ और अतिरिक्त सदस्यों प्रोफेसर और श्रीमती कुर्स को श्रीमती सीनेट के ड्राइंग रूम में एक भीड़ भरे कार्यक्रम में सोसाइटी में शामिल किया गया था।
उन्हें पहचान के लिए संकेत और पासवर्ड प्राप्त हुआ। CWL नियमित रूप से लॉज की बैठकों में भाग लेता था, अक्सर श्री सीनेट के घर पर भोजन करता था। चर्चाएं थियोसॉफिकल शिक्षाएं के इर्द गिर्द घूमती रही और परस्पर विरोधी बयान में सामंजस्य स्थापित करने के बाद तब अधिकारी की कमी ने चुनौतियां पैदा की। महान निपुण गुरुओं के शिष्य बनने की आशंका के सुझाव से उपस्थित लोगों के बीच कुछ आश्चर्य पैदा कर दिया। लंदन लॉज के पास थियोसॉफिकल जानकारी में समिट स्तोत्र थे, जो मुख्य रूप से श्री सीनेट की पुस्तकें, मैडम ब्लावेस्की की आइसिस अनविल्ड और डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड की द परफेक्ट वे पर निर्भर थे। मास्टर कुमुथी की ने उनके प्रयासों पर संतुष्टि व्यक्त की और उनकी सहायता के लिए भारत से अपने एक शिष्य को भेजने का वादा किया। श्री मोहन चैटर्जी कलकत्ता की एक युवा वकील लंदन लॉज की सहायता के लिए 1884 की शुरुआत में अर्नर ओलकोट के साथ लंदन पहुंचे। उनके संबंधों में दीक्षा के पथ और उनकी आवश्यकता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसके बाद वे लंदन लॉज में लेन देन पर प्रलेखित किया गया। श्री सीनेट के स्वागत समारोह में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान उन्होंने और कर्नल ओलकोट की व्यक्तिगत रूप से लगभग 200 लोगों ने अभिवादन किया। विशेष रूप से श्री ऑस्कर वाइल्ड्स ने अपनी अनूठी पोशाक और श्रीमती सीनेट के प्रति मंच पर फुसफुसाहट भरी टिप्पणी से एक विशेष छाप छोड़ी। एक ब्राह्मण के रूप में पश्चिमी रीति रिवाजों से अनभिज्ञ मोहिनी ने भीड़ के उत्साहपूर्व हाथ मिलाने को असुविधा के साथ सहन किया। अपरिचितता के बावजूद उन्होंने धैर्यपूर्वक कई सवालों के जवाब दिए और शाम के नायक के रूप में उभरे। श्री सीनेट ने स्वागत समारोह में उनकी पहली उपस्थिति के दौरान कई उपस्थित लोगों ने श्री मोहन चैटर्जी को बहुत सम्मान और प्रशंसा के साथ देखा। आत्मवाद की जांच के क्रम में CWL ने श्री एंगलिटन सहित विभिन्न माध्यमों से बातचीत की। उन्हें खिलाफ कहानियों के बावजूद CWL ने श्री एंगलिटन को सीधा और विनम्र पाया। एंगलिटन के पास कई नियंत्रण थे, जिनमें डेजी नाम की एक लाल भारतीय लड़की और अब्दुल्ला नाम का एक लंबा अरब शामिल था, जिन्हें उल्लेखनीय घटनाएं पैदा की। कंट्रोल अर्नेस्ट के साथ बातचीत के दौरान CWL ने उनके माध्यम से मास्टर्स ऑफ विजडम को एक पत्र भेजने का प्रस्ताव रखा। आत्माओं के प्रारंभिक प्रतिरोध के बावजूद, विशेष रूप से डेजी, जो मिस्टर सीनेट को नापसंद करती थी, CWL ने आगे बढ़ने से पहले मिस्टर सीनेट से परामर्श करने पर जोर दिया। अतः श्री सीनेट ने CWL को प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे मास्टर्स ऑफ विजडम के लिए अर्नेस्ट को एक पत्र भेजने की योजना बनाई गई। धन्यवाद। चैप्टर 2 यहीं समाप्त होता है हिंदी में। Sir, unmute please.
उन्होंने 3 पत्र लिखे, जिसमें पहला पत्र उन्होंने मास्टर KH को लिखा, जिसमें उन्होंने शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की। दूसरा पत्र अर्नेस्ट को लिखा गया, जिसमें उन्होंने पहले खत की डिलीवरी की बात की। और तीसरा लेटर मिस्टर एरिंगटन को लिखा गया, उनसे ये निवेदन करते हुए कि दूसरा लेटर जो है वो बॉक्स में रखें। तो डिलीवरी कंफर्म की एलिंगटन जी ने नोट टू अर्दर, बट CWL रिसीव रिप्लाई दैट पहला लेटर मास्टर को नहीं मिला, वो वहाँ से किसी तरह गायब हो चुका था, और दूसरा लेटर ही वहाँ पर था। लेकिन मास्टर को दूसरा ही लेटर मिला, लेकिन बहुत महीनों के बाद भी कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आया उन्हें सवाल। हालांकि 6 महीनों के बाद मास्टर ने एक आंसर उन्हें प्रोवाइड किया इनडायरेक्टली, और जो CW लेडबिटर थे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि व्हाट ही हैड रिटन हैड प्रोसीडेड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये हिंदी की क्लास स्लाइड थी जो मैंने त्वरित कोशिश की उसको ट्रांसलेट करने की। और अब मैं चित्रा जी को भी लाता हूँ और मृणालिनी जी को भी स्पॉटलाइट में लाता हूँ, स्वयं भी आता हूँ। और पहले तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद तीनों को। चित्रा जी त्रिवेणी में मुख्य वक्ता की तरह पहली बार आई हैं, और उन्होंने ये साहस किया कि वो इस किताब को, जब मेरा विचार हुआ कि मैं चाहता था कि कोई ऐसे 3 लोग जो मतलब पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार ही ये सब कोशिशें कर रहे हों, वो तीनों मिलकर एक किताब का पूरा चैप्टर वाइज विवरण करें। तो यहाँ पर वो कोशिश की गई, और पूनम जी भी पहली बार बोल रही हैं, तो जाहिर है कि थोड़ी सी प्लस माइनस त्रुटि रही होगी, लेकिन इस तरह ही त्रिवेणी में मैं चाहता हूँ कि कुछ नए वक्ता भी अपने आप को वो प्रोत्साहित करें। मृणाल जी मराठी में काफ़ी बार आ चुकी हैं, लेकिन मुझे उनका मराठी ट्रांसलेशन बहुत सरल लगता है, जो सामान्य मराठी जानने वाले को भी शायद समझ में आ जाए। तो सभी वक्त जो यहाँ पर हैं, शिंदे जी, आपसे भी गुजारिश है सारे लोगों से कि आप बताएं कि ये कोशिश जो हमारी है कि एक किताब को 4 या 5 बार में, हर महीने या हर 40 दिन में, जो भी एक त्रिवेणी का मंगलवार आता है, उस दिन इस किताब के आगे के 2 चैप्टर्स जब चित्रा जी तैयार कर लेंगी इसी तरह शानदार PPT से, तो हम उसको वर्णन करेंगे 3 भाषाओं में। तो हो सकता है बीच की भाषा बदले, लेकिन या न बदले, पर मैं तीनों वक्ताओं से गुजारिश करूंगा कि अगर वो ये किताब के साथ बने रहेंगे तो चैत्रा जी के साथ साथ मृणाल जी और पूनम जी को भी इस किताब के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, और हम सबको भी। यश शिंदे जी, आप कुछ कहना चाहें इस कोशिश के बारे में? नहीं नहीं, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट चित्रा जी। चैत्रा सर, नमस्ते, थैंक यू सर। चैत्रा और चित्रा? चैत्रा सर, चैत्रा। चैत्रा, you are from Telugu Federation? Devalpalli, yeah, Karnataka. Karnataka, Devanpalli. Yes. Yes. Oh, He was there in Adyar, sir. That's where we all met. Just now, last. no, very nice, Chaitra ji. Thank you, sir. Very nice, very systematically went, and I really appreciate. And I also suggest Taral ji, get hold of her. Because She is very much there. she is intellectual and prepares very nice, and reads number of books, and whatever is to be focused that she has done, presentation was very impressive. Actually, I was thinking it should not end, so carefully I listened everything. Very Yes. nice. I have visited Devanpalli. Okay. And My grandfather was the member there, Devalpalli, so I joined there. But presently, I'm going to Bangalore City Lodge because I'm in Bangalore. Very nice, very nice. You study the way of studying and presenting it. Such lectures we need. yes, definitely. And very nicely you did. One thing you must observe: better avoid the pictures of masters of the wisdom, because we can't say the caption correct. Many times we may fail to stay. And second one correction you must follow. You said for being member,
two second-hand people should, instead of using second-hand, you say sponsors. Two sponsors are needed for Actually, making it in the book, it was written like that. So second-hand. Yeah. second Actually, hand. Shindeji, very methodically, Chetraji approached. I just told her 20 days before, and she sent me the entire book and said that give these 2 pages, first 2 chapters to the translators. Then I said that no, you will have to put things together in a short form. So in 40 minutes, we can take at least 1 chapter in 20 minutes. So that's how she again posted me the Word file. And then again, she did a PPT. So maybe in the next chapters, Shindeji will find more finer things. No, by- I know. I have read that book. I I have know, sir. studied I know, that sir. book, and I am much impressed with that book because it is the C.W. Leadbeater who has joined the Theosophical Society, and how I became a Theosophist is a really wonderful title. Everybody should read it. But we need such lecturers also who can explain very well. And also I thank to Mrinal Joshi, who gave very good translation in Marathi, so that the Marathi Federation people can also be benefited. Many are there who have not read that book. And Chaitraji made it very nice. I am very thankful to Chaitraji. No, sir. Thank you Can so I much. add something, Taralji, now? Yes. Yes, sir. You have time? Yes, we have time, sir. Please go ahead. Actually, it is said about the Theosophy, how C.W. Leadbeater attracted to Theosophy. And when he contacted the H.P. Blavatsky, and he was impressed by H.P. Blavatsky only through look. Her look was so impressive that he transformed himself. And when it was asked about what is this Theosophy? And she replied, if you speak of Theosophy, I answer that as it is existed eternally throughout the endless cycles upon cycles of the past. So it has been there eternally, cycles upon cycles. This reply she gave, and then she said, so it will ever exist through the infinitude of the future. Because Theosophy is synonymous with everlasting truth. So these 3 things, it was there, it will be there, and it will always will be there in infinite days. Yes. And what is that is, it is a everlasting truth. When she came to this truth, she speaks of Theosophy as the synonymous with the everlasting truth. And therefore she selected no religion is higher than truth as a motto of the Theosophical Society. Later on, later period, one more thing I would like to add here. Sorry, I am taking your time, but it is important to... This is the addition time. All can add, whoever has studied. Yeah, just because all these people I know well, Chaitraji and Mrinal, and also Poonam, they are trying to study the Theosophy. Yes. And going deeper and deeper into this. Just I want to say that before founders came to India, before their arrival, Sri Ramalinga Swami in Tamil Nadu, he predicted that so and so are coming here, 2 people are coming here, and they will be spreading the universal brotherhood. And even before the founders arrived in India, there was Swami T. Subbarao, yes, whom HPV considered her equal in occultism. So it is not that the Theosophy, how Theosophy came to me is the title of the book, but how Theosophy came to India is also very important to know. It is already professed by the Ramalinga Swami, and already there was T. Subbarao,
who was the colleague of the H.P. Blavatsky in occultism. So this is what I want to say. And later on, in later period, I connect with the J. Krishnamurti. He also spoke about the truth. And he said, when theosophy is truth, then Krishnamurti also said, truth is a living thing. He said a living thing. And a living thing has no place, no abode, no time. It is free of any conclusion and any theory. So this is what we must remember, how theosophy is important in our life. Yes. I really encourage you, all the three people who spoke here, keep this study continuous in your life. Not for the Taral Munsi's this program, but you go on studying. Your way of studying, Chaitra, is very good. Keep it up. Thank you very much, Taralji, giving me this opportunity to speak on this occasion. Thank you, sir. And actually, you said it rightly that Triveni, what happens that there are number of speakers who wish to speak for the first time, but maybe we are providing that platform on which once they come, automatically they will go more deeper into it. So this time I have caught these three people that please study the entire book chapter wise, and in each Triveni meeting you have liberty to have at least 2 chapters summarized there. Earlier, what used to happen that we used to take the entire book in one Triveni meeting. So that was, I thought, not sufficient. So we started this new thing. Also, every time I put this flyer there, I put a small thing that whoever has read the book and has some questions, they can also WhatsApp it to me. So maybe if that happens, people like Shindeji or who have already read the books can answer those questions. So it will be in a shorter time, a question and answer thing also will appear once this format is accepted by all. I hope you like this idea, sir. Yeah. Go ahead. Yes, Vimalji, you were there and... Yeah, I just want to say to Mrinal, Poonam and Chaitra that trust me, this was not the first time you guys are studying this, and nothing matters. You did a great job today. It was really amazing, very nice. I thought the slides were too good, and the translations and everything was perfect. So I just think that what you all to sort of improve the next session, if you want to take my idea. One idea is that you could have this Zoom call amongst yourselves so that you can help each other in correcting pronunciations or other things that, misunderstood, things that are not properly translated. So you could correct each other, and that would make it will add to the presentation. So otherwise, I think you're all doing. Yeah, you're all doing a great job. There's absolutely nothing. And trust me, you guys have been here before. So the drag to theosophy is not a new drag. You have come here and you have studied this many times in your previous lives. That's why with such small children also and so much headache, I'm sure you are doing such a great job. Thank you. You absolutely took words out of mind. Poonamji was here at 6:35 because she was on the way from the school, bringing her little child from the school because there was no one today to fetch them. And Chitraji, you must have seen a small, beautiful child peeping again and again and making food. So, with all these two ladies having the young generation around, maybe some vibration will have reached them also. So this is wonderful thing. Thank you. Yes, go ahead, Pooja ji. Pooja Gole ji. Sir, Tarunji, may I speak? I'm Shastri from AP. Go on. I'll talk later. सर शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं. हाँ शास्त्री जी बोलिए आप. Good evening to all of you, sir. Yes, sir. Sir, very interesting topic, but one thing, in the topics, nobody has taken up about the replies given by masters. Have they given any reply, madam?
Chaitra ji? Yes, Have you come yes, across? yes, sir. In the future topics, some Chapters. will be addressed. Future Acha. chapters. Yeah. Really, this spiritualism and then occultism require a lot of description. Individually, it has to be described each word. Then only you will be able to go into the depth of it. Sinde sir said one thing, theosophy. Theosophy is a good subject, but now we are trying our best. Every theosophist participating in these meetings, they are trying their best to make it more simple and easily graspable. Then if it is done like that, it can be very useful. Taralji, Yes, can sir. you give me a chance to speak? Arey, most welcome, Shastri ji. Just select a Tuesday in March or February and just tell me that subject also which you want to speak. Actually, I wanted to. The main next speaker month- decides the subject. Yes, sir. Yes, sir. So please go ahead. One more I'll thing, call sir. you, sir. After this meeting, I'll call you. Okay. Okay, sir. Or you can also do that thing. Thank you so much, Shastri ji. Thank Anyone you, sir. else? यस आभा जी आप आए थे और फिर आपको मैंने नहीं बोलिए पूजा बोलिए जी हाँ जी आई एम यूजिंग पूजा as a computer so that our name appears there with पूजा या सबसे पहले तो तरल जी मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आप नए नए ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं स्टाइल्स लेकर आ रहे हैं और इस बार जो आपने शुरू किया है किताब पूरी पढ़ने का तो वैसे सभी लॉजिस्ट में ये चल रहा है लेकिन आपका जो बुक है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि सभी के लिए हम लेडबीटर को अनप्रेजेंट को इनको जानना चाहते हैं तो न्यू कमर्स के लिए भी वो बहुत अच्छा है और एक्चुअली मैंने भी वो किताब पढ़ना चाहती थी लेकिन नहीं पढ़ी अभी तो उस हिसाब से आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिसनिंग बीच में थोड़ा मैं सुन नहीं पा रही थी इसलिए कंप्यूटर शुरू किया है और चैत्रा जी और पूनम जी दोनों को मैं ज्यादा बधाई इसलिए दूंगी कि छोटे बच्चे रहने के बावजूद बाजू में है वो खेल रहे हैं एक्चुअली उनकी अटकेलियां अच्छे भी लग रही थी वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे उसकी वजह से हम लोग सो इवन देन यू आर ट्राइंग टू गिव डिलीवर अ लेक्चर सो हैट्स ऑफ टू यू वेरी नाइस और मृणाल को तो मैं वैसे भी जानती हूँ शी इज वेरी गुड और मृणाल को जब नाम देखा मैंने तो मैं बोली अरे वाह किताब भी अच्छी है मृणाल भी है मराठी में बोल रही है तो और भी इंटरेस्ट आया मुझे बहुत अच्छा थैंक्स लेकिन नमस्कार तरल जी सर ने बताया सर ने जैसे बताया मेरे भी मन में वही आया कि हम लोग वही सुनते आए कि हम लोग मास्टर्स को ऐसे सबके सामने नहीं रखते हैं तो वो बात सिर्फ चैत्रा जी ने वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे और हाँ सुषमा जी गो अहेड हाँ नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद तरल जी आपको तीनों वक्ताओं को ये किताब मैंने हिंदी में पढ़ी है मेरे जीवन में थियोसॉफी कैसे आई ये किताब मेरे पास हिंदी में है मैं इसका ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में ये किताब मेरे पास है मैंने इसको पढ़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्ताओं ने जो है फोकस किया है मेन पॉइंट्स पर एक एक चैप्टर 10-10 पेज का है और 9 चैप्टर्स हैं तो बधाई देती हूँ कि उन्होंने पूरा जिस्ट बताया है तो वो विषय समझ में आ रहा है और दूसरी बात जब मैंने ये किताब पढ़ी थी तो मुझे स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म ये किताब पढ़ने के बाद समझ में आया कि स्पिरिचुअल जो है वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल है स्पिरिचुअलिटी नाउन के रूप में इस्तेमाल है और स्पिरिचुअलिज्म बिल्कुल डिफरेंट है हम लोग जो है स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है कि स्पिरिचुअलिस्ट इज अ पर्सन हु सीक्स टू मेक कांटेक्ट विद द डेड विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम ये किताब पढ़ने के बाद मैं स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिज्म में अंतर कर पाई और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको और क्लियर करेंगे शिंदे साहब कि स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअलिटी में बहुत अंतर है और ये किताब पढ़ने से ये बात समझ में आती है लोग स्पिरिचुअलिज्म को स्पिरिचुअलिटी समझते हैं आध्यात्मिकता समझते हैं एक्चुअली वो आध्यात्मिकता नहीं है वो प्रेत विद्या है ये किताब से ये बात स्पष्ट होती है तो मैं शिंदे साहब से जो रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा प्रकाश डालें जी Sushma ji, that is what HPB did the work. She spiritualized the spiritualism.
वाह Actually, she entered into this spiritualism and then showed this is a phenomenon. This can जी happen, but we must go beyond this. This is how यस in Western countries she spiritualized the spiritualism. This is what Yes. her work was very important in this way. वी शुड गो बियॉन्ड स्पिरिचुअलिज्म वी That शुड गो means, बियॉन्ड दिस see, as you said, dead animals and all that, dead cells contacting with many phenomenon, that's all right. But you must go beyond. That spiritual Yes. development is important. Spiritual evolution is जी important. So सर previously there was very famous spiritualism and जी Leadbeater, etc. They attracted by this. AP जी Sinet and all those. जी And she spiritualized this whole spiritualism. That is what जी जी we call it. ये किताब पढ़ने के बाद मुझे स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म में अंतर समझ में आया। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, आपने वक्ताओं को ये बता दिया कि बने रहें साथ में किताब के अंत तक होने के लिए। 9 चैप्टर्स आपने जैसे बताया, अभी 2 ही हुए हैं, तो 3 या 4 बार में ये कोई चैप्टर बड़ा होगा तो उसे हम एक भाग में ही लेंगे त्रिवेणी के। यस, थैंक यू सुषमा जी एंड आभा जी, कहिए आप, आभा जयमीन जी। Sir, thank you so much. A very divine evening to all of you, and congratulations to all the speakers. बहुत अच्छा करने in all the 3 languages. और ये देखिए, मैं ये बुक मैंने अभी पढ़नी शुरू ही की थी। क्या बात है। करीब 3 दिन पहले से मुझे कुछ ट्यूशन हुआ। ये बुक मैं पुणे गई थी तब बहुत सारी लाई थी बुक्स वहीं से, और ये मैंने शुरू किया। अभी हम लोगों का वॉइस ऑफ साइलेंस चल रहा है इवनिंग में, जो हम लोगों का एक स्वाध्याय होता है एक अलग सेशन पे। हाँ, तो वो अभी बस जस्ट वो खत्म होने पे, तो मुझे लगा कि अब मैं ये पढ़ूं, और तभी आपका मैंने ये देखा। तो बिल्कुल अभी मेरे कुछ ही इसमें पन्ने मैंने पढ़े हुए थे, तो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि मुझे आगे और फर्दर इंसाइट मिली कि आगे मैं फर्दर करूं इसको, और रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे कहते हैं ना, हर सोल की अपनी अपनी जर्नी है जी, तो वी आर गोइंग इन आवर ओन जर्नी। थैंक यू सो मच जी। और बहुत जल्द मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं, उन्होंने एक छोटी सी लाइन कह दी मुझे, जैसे वो कहते हैं ना कि एक कुछ तो भी था कि आपने तिजोरी खोल के दिखा दी, तो उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ साइलेंस करीब करीब खत्म हो रही है, तो वो ध्यान हाँ रखिएगा कि वो किताब आप ही को लेना है इस तरह से इसके बाद। वो भी बहुत गहरी बुक है, जी, वेरी डीप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अन्य कोई? हाँ, 1 मिनट सर। चैत्रा जी, आपका मदर टंग तेलुगु है? Kannada and Telugu, sir. We are at the border, so both we speak at So home. you can understand Telugu? Yes, yes. Can you speak thoroughly? I can read and write Kannada, speak, but Telugu I can read but not write. I can speak. ओह, पूजा का भी दर्शन Sir, हो। Tarun ji, जी, I like to give a suggestion, whether how far it is a success possible or not, I don't know. बोलिए। One thing, if these 3 people today we have seen, they are much interested in theosophy. Why don't we become a small group in WhatsApp so that we can discuss before Sure, we sir. start? I will. Just now we are discussing on a book, so I will call you, and then we can definitely go ahead with the new ideas, sir. Okay, That's sir. what Triveni is about. Okay, I'll sir. call you, Thank you sir. very much. Okay, Thank you, sir. sir. Thank you very much, sir. Yeah. Anyone else? मैंने ये तो कहा ही नहीं कि अगर पूनम जी, चैत्रा जी और मृणाल जी को भी ये सब कुछ सुनने के बाद कुछ ऐड करना हो अपनी ओर से, तो वे किसी भी भाषा में, अभी जरूरी नहीं है कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी में ही बोलें, लेकिन आप सजेस्ट कर सकती हैं क्या आपको लगा, क्योंकि पूनम जी भी पहली बार हैं और आप भी पहली बार मेन स्पीकर की तरह हैं, मृणाल जी काफी बार आ चुकी है, लेकिन वो भी शेयर कर सकती हैं, फिर हम समापन की ओर जाएंगे। सबको धन्यवाद। और आपने जो सबने सजेशंस दिया उस पर भी विचार करने लायक थे वो सब, और जरूर हम तीनों एक साथ मीटिंग करके आगे की जो वो पुस्तक डन है, लेनी है जो भी तो नेक्स्ट, उसके ऊपर हम जी, जो भी डिस्कस नेक्स्ट करके। चित्रा जी आप तैयार करेंगी तो प्लीज सेंड इट बिफोर फ्राइडे ऑफ, और वो फ्राइडे को मैं इन दोनों को भेजूंगा, एंड देन ऑन संडे वी विल हैव अ त्रिवेणी जूम मीटिंग। तो उसमें क्या होगा कि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे,
एंड जैसे आज मैंने स्पॉन्टेनियसली पीपीटी शेयर करने की कोशिश की इन बोथ द लैंग्वेजेस, तो मैं भी थोड़ा परफेक्ट हो गया। तरल जी, जी Taral ji, you give time to Chaitra ji because she prepares very well. आई नो And सर। she brings many books together, she reads, and let her make the efforts first. Don't call him immediately, but let her give her time, because we liked it. The way in which this is presented, Yes, we sir. must give time to her, even a small child is there. And No, definitely, Shinde ji. But then that's why I said that not every month, but at least in 40 days time. Correct. Otherwise, people will forget the book, earlier chapters. Correct. Yes, Okay. Poonam ji, would you like to share something? Thank you so much for the opportunity. So this is the first time I'm just as a speaker speaking. So gratitude because I'm just understanding the topics. अभी शुरुआत ही है मेरी. So आपने चांस दिया और इतनी सारी अच्छी स्पीकर्स और सभी के साथ समझने का उसको हर एक लैंग्वेज में तो बहुत आनंद आया और समझ में आया. हर लैंग्वेज में था फिर भी एक अलग अलग मैसेजेस थे. तो धन्यवाद उसके लिए. बहुत बढ़िया. आप अभी Sir, I Yeah, have actually I know English, but Hindi is like my third language. I am not so fluent in Hindi, so even to correct them, I'm not so good. That is the No, fact. it's not that correction. It is the correction about the all names and all the Names. Okay. philosophical values which we talk in English or Hindi. That don't worry, we will discuss it in the meeting. Okay. Okay. Yes, anyone else, or we can go ahead with the finishing procedure. Okay, Atul ji, I don't see anyone, so you can go ahead. અર્ચનાબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे
नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्